I got the call from the recruiter that C2 round feedback is very positive. They are gonna with the offer. एक negotiation call हुई थी मेरी salary negotiation के बाद. Hi everyone, welcome all to my two channel. So today I'm gonna discuss the detailed interview experience for the fifth round for the SD2 role. First, I will discuss the how exactly I got the call from the fifth round for the SD2 role, and the second I will discuss the overview of the interview experience. Third, I will discuss the each interview round of experience. सो फॉर कॉल के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था. वन ऑफ द रिक्रूटर फॉर द फ्यूचर ओवर द लिंक्डइन रीच आउट टू मी दैट है आशीष, आर यू रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस SD2 रोल और नॉट? इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड प्लीज शेयर मी द रिज्यूमे. तो मैंने वहां पर रिज्यूमे शेयर कर दिया. रिज्यूमे शेयर करने के बाद उसने मुझसे 30 मिनट का स्लॉट मांगा कि ही वांट्स टू डिस्कस मोर अबाउट द JD ओवर द कॉल. तो मैंने 30 मिनट का स्लॉट दे दिया उसको. सो नेक्स्ट डे एक मेरी मीटिंग शेड्यूल कर दी उसने. सो दिस इज हाउ आई गॉट द कॉल फ्रॉम द फिफ्थ रैंक फॉर द SD2 रोल. नाउ लेट मी टेल द ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस. सो देयर विल बी द 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट विल बी द स्क्रीनिंग, द सेकंड विल बी द ऑनलाइन असेसमेंट, थर्ड विल बी द HM राउंड एंड द फोर्थ विल बी द C1 राउंड, देन फिफ्थ विल बी द C2 राउंड. सो ये 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे. नाउ लेट्स गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच इंटरव्यू राउंड. So first let me talk about the screening round. In the screening round mostly he will try to know that are you really fit for this JD or not. So he will be discussing about the project, he will be discussing about your skills, he will be asking about your experience, he will be asking about some kind of the challenging project that you have done, he will be asking what the scale you currently are working. Also he will be asking about your expectation in terms of the compensation, in terms of the quality of the work, in terms of the project that you are looking from the next role, and he will be asking why are you looking for the job switch. This kind of question will be there. Then after this he will be showing the what kind of the product the fifth round has already built. सो वो फिफ्थ ट्रेंड के प्रोडक्ट के बारे में बताएगा. फिफ्थ ट्रेंड के प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटी PPT एक शो करेगा जिसमें हर एक फिफ्थ ट्रेंड के जो प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर को कैसे सर्व करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनलिटी दे हैव. सो दिस काइंड ऑफ द डिस्कशन विल बी देयर. सो दिस विल गो अराउंड द 30 to 45 मिनट. तो ये स्क्रीन राउंड खत्म हो जाएगा. सो स्क्रीन राउंड खत्म होने के बाद ये सारी डिटेल जो भी आपने स्क्रीन राउंड में डिस्कशन किया होगा विद रिक्रूटर, वो सारी डिटेल हायरिंग मैनेजर को सेंड की जाएगी. सो हायरिंग मैनेजर विल डिसाइड वेदर टू शॉर्टलिस्ट यू और नॉट. सो मेरे केस में लाइक आफ्टर द 2 days आई गॉट द कॉल from the recruiter that they have shortlisted, manager has shortlisted my profile, they are gonna with the online assessment. So जब मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई उसके बाद मुझे ऑनलाइन असेसमेंट के लिए एक लिंक आता है. ये ऑनलाइन असेसमेंट 60 मिनट का रहेगा. 60 मिनट में आपको एक DSA क्वेश्चन रहेगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा. तो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाता है. ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर होने के बाद आफ्टर द 2-3 days आई गॉट कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर दैट यू हैव क्लियर्ड द ऑनलाइन असेसमेंट. नाउ दे आर गोना विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. Next round of interview is the hiring manager round. One of the interesting thing I found about the fifth round that they took the HM round before the taking the DSA and design round. So this is the one of the interesting thing, because if you are not fitting into the team, there is no point to taking the DSA round and the design round. So this is the one of the interesting thing about the fifth round इंटरव्यू प्रोसेस. तो मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड शेड्यूल हो जाता है. हायरिंग मैनेजर राउंड मोस्टली मैनेजर के साथ होगा. जिस टीम को आप ज्वाइन करने वाले हो उस टीम के साथ होगा. ये अराउंड डिपेंड द मैनेजर अवेलेबिलिटी, बट इट विल बी अराउंड मिनिमम 45 मिनट. तो मेरे केस में शेड्यूल हो गया. तो इस 45 मिनट में फर्स्ट मोस्टली 30 मिनट ही विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ योर प्रोजेक्ट, करंट कंपनी प्रोजेक्ट. So he will be discussing about your project, he will be discussing about the technology, he will be discussing about the architecture of your current project, and what are the challenges that you have faced already current project. So this kind of question he will be asking, and also he will be asking some behavioral type of the question like tell me the time when you helped the other team even it was not your responsibility, tell me the time when you got the conflict with the manager, tell me the time how did you solve that, tell me the time that you are working on the project but you exceed the डेडलाइन. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ही विल बी आस्किंग. 30 मिनट जब मेरे प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया उसके बाद उसने, क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट कर रखा था फ्रॉम स्क्रैच, द बुकिंग द स्पेस इन मिंत्रा वेयर हाउस फॉर द वेंडर एंड सेलर. सो दिस प्रोजेक्ट वाज इन्वॉल्विंग द कॉन्करेंसी हैंडलिंग. तो ही वाज मोर इंटरेस्टेड नोइंग हाउ डिड आई हैंडल द कॉन्करेंसी इन दैट प्रोजेक्ट. सो ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्करेंसी. सो कॉन्करेंसी एंड थ्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. दैट्स हाउ दिस राउंड एंडेड. तो मुझे आफ्टर द अराउंड 2 days
I got the call that I cleared the HM round. Now they are gonna with the C1 round, that is the DSA round. So C1 round it will be the 1 hour और ये hacker rank पर होगा mostly. In this first he will be asking the DSA question. Then after that he will be discussing the some advanced concept of the Java. So पहले DSA पूछा. DSA में question जो उसने मुझे दिया था, it was based on the array. You are given the array of integers and you are given the target and you need to find the all the pairs, unique pairs, which sum is equal to the target and also which difference is shouldn't be more than 1. So this kind of question was there. It was mostly medium level. So I solved that question. And also one of the interesting thing, you have to pass all the test cases to get the for the next round of interview. So वहां पर 13 टेस्ट केस थे, मैंने 13 टेस्ट केस पास किए. उसके बाद जब ये क्वेश्चन हो गया डीएसए का, उसके बाद ही विल बी asking more about the Java concept. He will be asking about the collections, all the collections concept. Like he will be asking about the hash map, how it internally works, how did you handle the collision, what is the time constantly of adding the element, what is the time constantly of removing the element, what is the time constantly of searching the element in the hash map. So this kind of the question will be there. And also he will be asking some question around the threading, how the multi-threading works, how the memory management happened in the Java. So this kind of the question will be there. That's how the C1 round of interview ended. After the 2 days again I got the call from the recruiter that I cleared the C1 round. Now they are gonna with the C2 round. The C2 round is little bit difficult than C1. So that's how the C2 round will be there. In the C2 round उसने मुझसे इंटरव्यूअर ने 2 क्वेश्चंस पूछे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द डीएसए. तो डीएसए में क्या था कि आई वाज गिवन 1 मैट्रिक्स, ईच रो रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. वो कैरेक्टर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है. तो 0 मींस रिप्रेजेंट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द पर्सन, 1 मींस रिप्रेजेंट देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द पर्सन 1 to the person 2. So for example, person 1 knows the person 2, person 2 knows the person 3. Now the person 1 also knows the person 3 via the 2. So this will form the one group. So now I need to tell how many unique group are represent in that party. So that was the question. So it was nothing. If you see the breakdown of this problem, it was just similar like island problem. So I solved this and I am able to pass all the 13 test cases. And the second question was really interesting. In the second question, he was really interested to know my multi-threading concept. He was really interested to know whether I know the multi-threading into depth or not. So he asked me, so there is a list of employees and every employee has the like 3-4 attributes. One is the ID, let's say, second is the employee name, the third is city. तो हमें ये बताना था कि I will be given the city name. I need to tell how many employees are living that particular city by using the multi-threading, and we have to write the efficient algorithm. So that was the question. So I solved that. Once I solved this second question also, then he was interested knowing the my multi-threading concept. So उसने multi-threading के around बहुत सारे questions पूछे. Multi-threading and again concurrency, like one of the favorite question of every interviewer, concurrency and multi-threading. If you are coming from the Java background, you should know multi-threading and concurrency. So that's how the C2 round ended. उसके बाद after the 2-3 days, I got the call from the recruiter that C2 round feedback is very positive. They are gonna with the offer. So after the positive feedback, एक negotiation call हुई थी मेरी salary negotiation के बाद. After the 1 week of the negotiation call, I got the job offer from the 5th round, and that's how the whole interview process of the 5th round ended. And yeah, for the resources point of view, I will be creating the separate video for that. So that's all. Thank you guys for watching.